शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड आर टुडेज वीडियो बेस्ड ऑन अ मार्केटिंग मैनेजमेंट टॉपिक दैट इज लेवल ऑफ प्रोडक्ट। सो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और बात करते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दैट प्रोडक्ट आर tangible offering, but it is not right. Product can be anything that can be offered to a market to satisfy a want or need, including physical goods, services, experiences, event, person, place, property, organization, information and idea. तो जो आर नेक्स्ट को नाउ, तो अब जो क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्वेश्चन इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग और व्हाई वी आर categorize or divide the product in various level. What is the need? So the simple answer of this question is when a marketer starts planning about its offering needs to address 5 product level because each level add more customer value. When all 5 level constitute together makes customer value hierarchy. So our level of product look like this as you seen on the screen. So this is a diagram that represent level of product. In the center we have core benefit or core product. After that we have basic product. It is also called generic product. Next is expected product, augmented product and potential product. So let's start our discussion about level of product one by one. We discuss all these levels and try to understand why a marketer divided its offering in various levels. तो शुरू करते हैं अब अपने फर्स्ट लेवल के साथ, जो कि फंडामेंटल, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल जो स्टेज है अब प्रोडक्ट की, उसके साथ, दैट इज कोर बेनिफिट और प्रोडक्ट. द core benefit or product is the fundamental need or want that the customer satisfy when they buy the product. At this stage the marketer sees themselves as a benefit providers. So let's take an example and try to understand the concept of benefit product. Suppose we we rented a hotel room. So why we rented a hotel room? Our purpose is very simple, for rest and sleep. So this is the basic needs which we are going to fulfill by rented a hotel room. So hotel room is our basic product or fundamental product or core benefit. Next level is basic product or generic product. It is also called generic product. Is a basic version of the product made up of only these features necessary for it to function. The marketer must turn the core benefit or product into basic product. So what is the basic product? Basic product is that all the necessary feature which is feature help us to satisfy our need. That is the addition of the basic प्रोडक्ट. तो एक एग्जांपल लेते हो, समझते हैं कि क्या बेसिक प्रोडक्ट एक्चुअल में है. तो इन द लास्ट स्टेज, इन द कोर बेनिफिट स्टेज, वी डिस्कस take an example of hotel room. So we rented a hotel room for rest and sleep. दैट इज़ द रूम. तो अब हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई कैसे होगी, फुलफिल कैसे होगी? सिंपली रूम से नहीं फुलफिल हो सकती. तो व्हाट इज़ द बेसिक प्रोडक्ट इन दिस केस? तो रूम हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ which help us to take the rest and sleep. For example, a hotel room must include beds, towels, washroom, etc. So towels, beds, washroom, these are the basic product. Now move on to next level, that is expected product. The expected product is the set of feature that the customer expect when they buy the product. So in last stage we continue with an example of hotel room. So let's continue our example and try to fit our hotel room in this level.
तो अ कस्टमर ने एक रूम परचेज किया है and room includes all the facility, but what is the expected product? A customer accept the clean beds, clean rooms, right, clean washrooms. So this is the cleanliness of the room is the expected product. And working lamps and fans are also the part of expected product. Now move on to our next level, that is augmented product. The augmented product refers to any product variation, extra feature or service that help differentiate the product from the competitor. At this level, marketer prepare an augmented product that exceed द कस्टमर एक्सपेक्टेशन. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको नहीं किया एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, वो वाला प्रोडक्ट आपने मिल रहा है. सपोज वी गो टू अ होटल एंड रेंटेड अ रूम for rest and sleep. So in this case, what and room also have all the features like beds, washrooms, towels, and clean also. So what is the augmented product in this case? Suppose hotel provides you free meals when you stay in the hotel. This is the augmented product because you cannot expect free meals from the hotel sides, right? So that the free meals part of your स्लीप एंड रेस्ट नीड. तो आपने जो नीड बेसिक नीड की थी आपको स्लीप एंड नीड्स, तो पर आपने को वहाँ पे क्या फूड भी मिल रहा है होटल की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट इज़ द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल प्रोडक्ट. The potential product include all augmentation and transformation the product might undergo in the future. This means that to continue to surprise and delight customer. So this is all about the level of product. Before concluding, we have another example and try to understand or revise our all these concepts by the help of this example. First is, suppose let's take an example of coat. So what is the core product? A warm coat will protect from cold, so the basic product is coat. And what is the base, sorry, what, so this is the core product. Now what is the basic product? What about basic product? Coat have all the qualities like coat is about to fit, high quality of material to be used by the time of making. तो दिस इज द बेसिक प्रोडक्ट. ने आपने क्या कि हमारी जो नीड थी क्या थी, प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेदर, तो हमें क्या चाहिए, कोट चाहिए. फिर नेक्स्ट इज बेसिक प्रोडक्ट. क्या होगा, तो आपका बेसिक प्रोडक्ट वो फिट होना चाहिए आपको, सपोज उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट? द कोट शुड बी रियली वार्म एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द वेदर. तो एक्सपेक्टेड क्या है कि वो आपको वेदर से प्रोटेक्ट करेगा. And what about the augmented product? What is augmented product? That warm coat is stylish according to trend and फैशन. तो आपका जो कोट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, साथ में ऑगमेंटेड क्या है कि आपका स्टाइलिश होना चाहिए, और जो करंट ट्रेंड और फैशन है इस टाइम वो भी आपने उसके अकॉर्डिंग उसको बना हुआ होना चाहिए. एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल प्रोडक्ट? अ कोट मेड ऑफ अ फैब्रिक दैट इज as thin as paper and light as a feather. This is the potential प्रोडक्ट. कि आपका जो प्रोडक्ट सपोज नेक्स्ट फ्यूचर में कंपनी क्या करे, इस तरह कोट बनाए जो जिसका जो फैब्रिक है पेपर की इतना थिन हो और फैदर के लाइक उसमें वॉर्मनेस हो. तो दिस इज द another example, or we bifurcated the offering into various levels. So now it's time to thinking about the product and try to differentiate or categorize the offerings according to the level of product. So I am giving you the 2 or 3 example and try to fit these product into these levels. So thinking about a bank account or a soft drink, and bifurcated the offering into various levels. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, keep watching. Thank you. Now it's time to subscribe.